Anantam Shukrana Guruji for this beautiful, blissful, divine satsang. We read the Shivpuran on Mondays at Guruji ka Ashram, Somerset, New Jersey. And if any of you are interested in taking up this seva, please reach out to Seema Auntie, me, or Rashmi Auntie. And let's begin with the synopsis for the last week. Last week we read chapter 45 of Rudra Samhita Part 3. In this we read that Mena was grief-stricken when she saw the real form of Lord Shiva, which she thought was extremely ugly. And after that, she decided that she is not going to agree to the alliance of Shiva and Parvati. Many gods tried to convince Mena to agree to their alliance, but she thrashed Parvati and threatened to kill her rather than agree to the alliance. Then she told Vishnu that she would agree to the alliance only if Shiva assumes lovely form and body and not otherwise. So Vishnu tried to urge Narada to convince Shiva to assume an extremely beautiful divine form because Mena had put that condition. Now, of course, Narada convinced Shiva, and Shiva assumed a very beautiful, comely, exquisitely beautiful form. And Narada was delighted to see that form, and he bowed down in front of the Lord and eulogized him greatly. Then he went to Mena and told her about what had happened. Then when Lord Shiva approached, everybody saw the beautiful form Lord Shiva had assumed, bedecked with beautiful ornaments. His beauty could not be described or put into words. And Mena was of course stunned to see Lord Shiva in that beautiful form, and she bowed down in front of the Lord, eulogized him again and again, and also apologized for the repulsive words she had used for the Lord. There, all the ladies who saw Lord Shiva forsook their activities and started looking and admiring the beauty of the Lord, and all the men and women, they felt extremely blessed to see Lord Shiva, and they tried to worship Lord Shiva with raw rice grains and sandal paste. And then all of them tried to tell Himavat and Mena how lucky they were to get Lord Shiva as the bridegroom. And Lord Shiva, who was overhearing all these conversations, was delighted, as were other gods. Today we will be reading chapter 46, which is the arrival of the bridegroom. Today Kaveri Auntie will be reading in English and Raj Auntie will be reading in Hindi. Jai Guruji. Jai Guruji. Chapter 46, the arrival of the bridegroom. Brahma said, the delighted Shiva, accompanied by his bhutas, ganas, gods, and others, went to the abode of the mountain zealously. Meena, the exquisite beloved of Himachala, got up from her seat and went into the harem along with the women folk. For the customary Niranjana, waving of lights, rites of Shiva, the chaste lady came near the entrance with lights and vessels in her hands, along with women folk of all sages. Veena saw the pleasure of Lord Shiva, the bridegroom of Parvati, served by all the gods and who by that time had come there. Shiva had the complexion of the color of the campaka flower. He had only one face but retained the three eyes. The face was beaming with a simple smile. He was bedecked in gems and gold and wore a garland of malati flowers. The gem-set crown was lustrous. He wore brilliant necklaces. He was bedecked in bangles and bracelets of fine workmanship. He was shining well with the two clothes of great value, fine texture and unrivaled beauty, and purified in fire. Highly embellished in sandal paste, aguru, musk, and fine saffron, he had a gem-set mirror in his hand, and his eyes were lustrous with the collyrium. He was shedding a halo around him, enveloping everything. He was extremely beautiful. He appeared to be very young. His limbs had the full complement of their ornaments. He was very attractive to the ladies. He was not nervous or self-conscious. His lotus-like face had the brilliance of 1,000 moons. His body shone with a refulgence more than that of 1,000 cupids. He was beautiful in every limb. Seeing the Lord thus as her son-in-law, Meena forgot all her grief. She was glad.
She praised her good luck. She congratulated Parvati, the mountain, and his entire family. She congratulated herself. She rejoiced again and again. Gazing at her son-in-law joyously with beaming face, the chaste lady performed the Niranjana rite. Remembering what Parvati had told her, Meena was agreeably surprised. With a beaming lotus-like face full of delight, she muttered to herself, I see the beauty of the great Lord far in excess of what Parvati had told me before. Shiva's loveliness cannot be expressed adequately now. In the same state of pleasant surprise she went in. The young ladies proclaimed that the daughter of the mountain was fortunate. Some girls said that she had become a goddess. Some said, such a bridegroom has never been seen, not to our knowledge. Some girls said to Meena, Parvati is really blessed. The chief of Gandharvas sang songs. The celestial damsels danced. On seeing Shiva's lovely form, the gods were delighted. The instrument players played on musical instruments in sweet tones, showing their diverse skill. The delighted Himachala too carried out the customary rites of reception at the entrance. Meena also jubilantly took part in the same along with all the women folk. She made formal inquiries about the health of the bridegroom and gladly went into the house. Shiva went to the apartments assigned to him along with the Ganas and the gods. In the meantime, the servants' maid in the harem of the mountain took Parvati out in order to worship the tutelar family deity. There are gods, saw joyously with winkless eyes the bride of the dark complexion, like the collyrium and fully bedecked in ornaments in every limb. With a side glance she was respectfully looking at the three-eyed lord, avoiding the eyes of others. With a gentle smile playing in her face, she appeared very beautiful. Her plaited hair was thickly grown and looked beautiful. Decorative lines over her body was exquisite. She had the tilak with musk and saffron, gem-set necklace shone over her chest, bracelets and bangles of gems and jewels shone brilliantly. With diamond earrings her cheeks appeared brilliant. Her rows of teeth sparkled like diamonds. Red lac applied over her lips, which were naturally red like bimba fruits, were exquisite. She had a gem-set mirror in her hand. A toy lotus also embellished her. Sandal paste, a guru musk, and a saffron were smeared over the body by her. Her feet and soles were naturally red. Tinkling anklets added to their beauty. On seeing the primordial deity, the mother of the universe, along with the Minka, the gods, and others, bowed down their heads with great devotion. The three-eyed deity saw her with the corner of an eye and was glad. On seeing the shapely body of Sati, he forgot the pangs of separation. With his eyes riveted to her, he forgot everything else. Hair stood on all ends of all over his body as he continued seeing her with delight. Then Parvati went out of the city, worshipped the family goddess, and returned to her parental abode along with the Brahmin women. Shiva went to the apartments indicated by the Himachala joyously along with the gods, Vishnu and Brahma. All of them stayed there with joy, attending on Shiva. They were duly honored by Himavat, the mountain's lord. Thank you. Now Raj Aunty will read in Hindi. जय गुरु जी। चैप्टर 46 मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्याय युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए।
हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रतन में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुंकुम के अंगार से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रतन में दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम और सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामिनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपनी सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त हो मन ही मन यूं कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसे बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य में इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी, शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर देखा ही नहीं, ना कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिचय किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने दिए गए स्थान जनवासी में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की और उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी।
उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। मुख्य स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर वलय कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्न में कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन अगर कस्तूरी कुमकुम का अंगराज लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी इनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। अध्याय 46 समाप्त। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू शंकर जी।